You know, they say there is no such thing as heaven, but you can always find one. अपने पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफर फिर से दोहराएं। याद है वो पहला दिन जब छोटी सी आंखों में मोटे से आंसू लिए तैयार हुए थे हम। कितने प्यार से पापा ने बालों को संवारा था, उनका हाथ पकड़कर जब पहली बार स्कूल आए थे। वो डरे सहमे से और रोते हुए उंगली छूटी थी हाथ से, पर शायद उस दिन एक नई दुनिया मिली थी हम सबको। वो हाथ उठाकर मैं आए कम इन मैम बोलना, वो अपने जिगरी यार के साथ बैठकर बैग और किताबें खोलना। इन्हीं छोटे कदमों से चलकर बड़े हुए थे हम। पापा का हाथ छोड़कर शायद पहली बार अपने पैरों पर यहीं खड़े हुए थे हम। कद में थोड़े बड़े हो गए पर दिमाग तब भी बच्चों वाला था। क्लास में बेंचेस को युद्ध भूमि बनाकर वो पेन फाइट करा करते थे। क्लासेस में पेपर प्लेन्स बनाकर उड़ाने भरा करते थे, और जब वो उड़न खटोले टीचर्स तक जाया करते थे तो टीचर्स हमें क्लास से बाहर भगाया करते थे। बाहर कान पकड़कर सर तो झुकते थे, मगर शैतानियों से भरे हम वहां भी नहीं रुकते थे। उन दोस्तों के वो थप्पड़ बहुत याद आएंगे जब कभी ये कहानियां हम यादों में दोहराएंगे। वो कांच में बाल सवार कर खुद को निहारना, वो अपने साथ अपने यारों को भी बिगाड़ना, वो टेबल्स पर छोड़े निशान हमारे बाद भी रहेंगे। वो रेड हैंड्स का दर्द हम खुशी खुशी सहेंगे। उस लंच बॉक्स का भी क्या कहना जो रिसेस से पहले सबकी भूख शांत करता था, और उस पराठे का भी जवाब नहीं जो सब यारों का पेट भरता था। यही थी वो जगह जहां हमने सारी कलाकारियां दिखाई थी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में बॉल को वो झट से मारना एक याद बन जाएगी। सारे गेम्स और मस्ती याद बहुत आई। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा। तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां। अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां। मर्ज भी है देती, चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेते यारियां। छोड़े यारियां। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। It's finally the time that we bid the final goodbye to this 12 years of beautiful school life. Honestly, I have not been the ideal, the very sincere child. But still, thanks to all of you, ma'am, because you were the ones who never lost their trust, their belief in me. When we were about to enter class 12, we just didn't desire to get more and more marks, but also to make the best memories of our school life. Unfortunately, COVID-19 was ready, waiting for us. But ma'am, it was because of your wholehearted efforts
that brought the best out of us. A special thanks to Jasmine ma'am, Rashmi ma'am, Sangeeta ma'am, Monica ma'am, Anubha ma'am, Vandana ma'am, to all of you. Because ma'am, without you, this journey wouldn't have been this beautiful that it has been. Thank you so much. Hi, ma'am. this is Avkar Sumedi, and my school life has been great. All the good memories I've collected, the best ones to be honest, all the unforgettable moments that I've lived and I'm gonna miss. All thanks to the teachers and the classmates I've had. I'd especially like to thank Indu ma'am and Meenu ma'am who had brought the best out of me, made me something special, the confident guy I am today. They have always supported me, rather it be the time when I was physically present at the school or in mid the COVID situations. You've always supported us. I'd like to present my deepest, most decent gratitude to all of the teachers, the staff members. Thank you. As we all know that due to COVID-19, more than 90% of the enrolled students are suffering all over the world. Due to these unusual circumstances, online classes are preferred more than offline classes. However, according to me, offline classes are much more better than online classes because it not only provides us with a healthy or competitive environment, but also it promotes better communication with the teachers, which helps the students in learning the concepts more easily and completely. But even in these tough times, the teachers at the Diksha Public School have worked both collectively as well as individually in order to create better learning situation for the students, thus promoting the idea that learning never stops. If I talk about my experience with the Diksha, then I would say it has been really great and awesome. I started my journey, my schooling journey with the Diksha in the first grade. So I still remember glimpses of my first day in Diksha, and I was pretty nervous, but luckily the teachers were very supportive of me all along. From first grade to 12th grade, all the teachers I met were very supportive of me. They took care of me, not only the academics point of view, but they also taught me a lot of life lessons, and I learned a lot from them. Especially Jasmine ma'am, I would say I learned a lot from her, and I'm pretty fond of her too, if I be more honest. And I think I'm gonna miss it. I'm totally going to miss it. दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया मुश्किल से मैं संभला था टूट गया फिर एक दफा बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा टूटे हैं हम तेरे बिन न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहें और हम यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या 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 दिन थे
dear students, wishing you all the very best for your future. Children, dream big if you want to get a big success in your life. Use your knowledge, wisdom for self-improvement, which can really become a strength in your life. We hope that the education that you have gained here would help you in scaling new heights. Thank you all for being a part of this incredible journey. All the best, dear students. Hello everyone, myself Indu Chawla. As you all know, I am PGT Physical Education from my sports department. I really want to congratulate you for your wonderful result, and from my department I want to give you only one suggestion: never give up in your life, because sky is the limit, and always be forward, be positive and be progressive. Thank you so much for everyone. प्रिय छात्रों, आज इस फेयरवेल के मौके पर मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आगे आने वाले समय में आप हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़े चलें और अपने जीवन में सफलता, हर कदम पे सफलता को ही प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। Hi everyone, congratulations to you all for your board result and all. May you achieve all the success in your life, and I want to see you all succeeding in your life, and which I feel that would be a great success of mine too. One thing always, class, please you keep in your mind: failure doesn't mean the end. Failure means the beginning of new opportunities in your life. You got another chance to give the best. Thank you. God bless you all.